Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. For the sake of transparency and clarity, so we will just refer you to the legal provisions which have already been set out and approved by the Privatization Commission for purposes of this transaction. So the relevant provisions are in the instructions to bidders, which was publicly circulated to all of the pre-qualified parties. The two relevant sections we will direct you to are summarized on the screen for your ease of reference. I'll just read them out now. We are in round one, so section 6.4.1 of the instructions to bidders. On the bid date, the bidder is to submit his bid in the sealed bid form and deposit it in the glass transparent box, which has already occurred earlier today, and the box is still here in front of you. Subsequently, there's a meeting of the PC board and the Cabinet Committee on Privatization, following which we are here starting the second phase of the process today, which will be for opening of the sealed bids. Once the bid is opened, I will request a volunteer to come and open the sealed bid form, and then it will be checked quickly by the FA team and the PC to ensure that there are no conditions attached to the bid and it has been properly and duly signed by the authorized representative of the Blue World Consortium. And then we will request the Blue World Consortium authorized representative to sign the record sheet. Next slide, please. ये कुछ खास provisions हैं just to highlight for you for the sake of transparency. In the event of a single bidder, which is the case today, so the instructions to bidders lays out a specific process to be followed. If the bid after opening, the bid price is less than the minimum expectation of the Privatization Commission, then the Privatization Commission, in its sole and absolute discretion, shall have the right to request the bidder, shall have the right to determine whether it wants to continue the bidding process, to modify it or cancel it, or Privatization Commission can request such bidder to match its bid price with the minimum expectation. ये उस सूरत में होगा if the bid price is less than what is the minimum expectation of the commission. If the Privatization Commission requests the bidder to match its bid price with the commission's expectation, and such bidder either declines the request or such bidder submits a revised bid, which is higher than their original, but still lower than the minimum expectation of the Privatization Commission, or the bidder submits a revised bid price which is equal to or higher than the minimum expectation of the commission, then in each of these scenarios, the bidding process will stop for today, and the Privatization Commission will take the bid price to the competent forums for approval, including the Federal Cabinet. The approval from the Federal Cabinet, as per the Privatization Commission ordinance and the instructions to bidders, it's very clear that it is a discretionary approval, so it is up to the Federal Cabinet whether or not they would like to declare the bidder, the sole bidder, as the successful bidder and thereby awarding them the privatization. So that is at the sole and absolute discretion of the competent forums, and that will take place subsequently after the process today. So with that, that concludes the overall summary for you, for your reference and for transparency on how it will be conducted. Now, I'll hand it back over to Mr. Basit from the Privatization Commission. Thank you, Ji. Moving on to the next step. I request a volunteer from the audience to step forward to open the sealed bid. आ जाए ना दें ज़रा माइक दे दें इनको. If you can, for the information of the public, state your name and profession, please. Ji. Assalamu alaikum all of you. My name is Kamran Raja. I am representing the Pakistan Times as a chief editor here. And today is a historic moment, so that's why I am here as a volunteer. So I think I should start this. चलो एक मिनट. If we can open the box. एक मिनट. So एक मिनट, if you can kindly
flag it to that camera. I request Mr. Unveils Aziz from the FA team to kindly step forward and assist in the process. इनको दें, ओपन कर दें, इनको दें. You have to show it to the camera, sir, please. So here is the seal bit. Which is open, and kindly hold it so that the frame can be captured. Does this conform to the instructions of? ये राजा साहब को दे दें. I request. रोस्टर पे आगे रीड करते हैं. नहीं, वहाँ पे mic है. We have the mic over there. We just have to confirm that if this conforms to the instructions as outlined in the ITB. ठीक है जी, ठीक है जी. एक मिनट दिखाते हैं, एक मिनट. इफ यू कैन रीड इट आउट सर फर्स्ट. सर इसको ज़रा अब बोल दें ऑडियंस के लिए. इफ़ यू कैन एंटर ऑन द स्क्रीन ऑल्सो प्लीज. नहीं जी, आपने यू जस्ट हैव टू रीड द वैल्यूज. द टोटल बिड प्राइस. Our bid price for the equity stake is as follows: Pakistani rupees 10 billion only. ये फिगर्स में इंसर्ट. 50% of the bid price. 15% of the bid price is the PIA HCL shares amount, and 85% of the bid price is the PIA CL new shares amount. We unconditionally and irrevocably agree and accept the terms and conditions set out in the bid documents, and each and every term and conditions therein and in our application form shall be considered as having been repeated herein as our express agreement. Okay, now I'm showing again this. I know. Thank you, Ji. I now request the authorized representative of the Blue World Consortium to kindly sign the record sheet. From the Privatisation Commission side, I will request Mr. Kamran Farooq Ansari, Director General INT/PNU, to kindly step forward and sign the record sheet. I now request Mr. Naveedur Rahman, Financial Consultant, Privatisation Commission, to step forward and kindly sign the record sheet.
From the Privatization Commission will now communicate the minimum expectation price to the bidder pursuant to the provisions of the instruction to the bidder document, and will give them 30 minutes time to consider, and will reconvene here at 7:10. So I request the FA team and Mr. Wes to kindly share the same with the PQBs, with the Blue World Consortium. Zishan Sahab? PIA की निजकारी का अमल बराह रास्त मनाज़र इस वक्त आप देख रहे हैं। बोली खोलने का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। कंसोर्शियम की जानिब से PIA की निजकारी के लिए 10 अरब रुपए की बोली लगाई गई है। ये मनाज़र इस वक्त आप देख रहे हैं। ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम की जानिब से सिंगल बेड जमा करवाई गई थी। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम के अलावा किसी भी और ग्रुप ने ताहाल कागजात जमा नहीं करवाए। वफाकी काबीना से PIA की रिजर्व प्राइस की मंजूरी सर्कुलेशन से हासिल की जाएगी। PIA की निजकारी का शफाफ अमल इस वक्त आप बराह रास्त देख रहे हैं। बोली खोलने का अमल जो है वो आपने बराह रास्त मुलाहिजा किया और PIA की निजकारी के लिए बोली खोल दी गई है। 10 बिलियन यानी 10 अरब रुपए की बोली जो है वो कंसोर्शियम ने लगाई है PIA की निजकारी के लिए, और ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम की जानिब से सिंगल बेड जमा करवाई गई थी। और ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम के अलावा किसी भी और ग्रुप ने ताहाल कागजात जमा नहीं करवाए। वफाकी काबीना से PIA की रिजर्व price on the screen ji, for the information of the audience also, and also for the pre-qualified bidder. So the PC's minimum expectation price is 85030 million Pak rupees. Billion 85.03 billion. So we'll give them 30 minutes and we'll reconvene at 7:15, but I request the guests to kindly be seated around 7:10. Thank you. PIA की निजकारी के हवाले से बराह रास्त से मनाज़र इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको आगाह करें कि PIA की निजकारी के लिए बोली खोलने का अमल और बोली जो है वो बाकायदा तौर पर खोल दी गई है। आधे घंटे का वक्त जो है वहाँ पर मौजूद तमाम जो लोग हैं उनको दिया गया है जो इसमें इंटरेस्टेड हैं। कंसोर्शियम ने PIA की निजकारी के लिए 10 अरब रुपए की बोली जो है वो लगाई है और ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम की जानिब से सिंगल बेड जमा करवाई गई थी। और ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम के अलावा किसी भी और ग्रुप ने इसके लिए ताहाल कागजात जमा नहीं करवाए। वफाकी काबीना ने PIA के रिजर्व प्राइस की मंजूरी सर्कुलेशन से हासिल की जाएगी। कौमी एयरलाइन की निजकारी कंसोर्शियम की जानिब से बोली खोलने का अमल आप मुलाहिजा कर रहे हैं इस्लामाबाद से, और इसके लिए आपको बताएं कि सिंगल बेड जो है वो जमा करवाई गई है। कंसोर्शियम PIA की निजकारी के लिए 10 अरब रुपए की बोली जो है वो लगाई गई है और ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम के अलावा किसी ने भी इसके लिए बाकायदा कागजात जो है वो जमा नहीं करवाए थे। कंसोर्शियम की जानिब से सिंगल बेड जमा करवाई गई थी और किसी भी ग्रुप ने ताहाल कागजात जमा नहीं करवाए। आधे घंटे का वक्त जो है अब वहाँ पर मौजूद जो दीगर कंपनीज़ हैं उनको दिया गया है। जो भी इसके अंदर इंटरेस्टेड होगा, अगर वो इससे ज़्यादा बोली लगाता है तो इस अमल को मजीद आगे जो है वो बढ़ाया जाएगा। बसूरत दीगर PIA की निजकारी के हवाले से जो कंसोर्शियम जिसकी जानिब से 10 अरब रुपए की बोली लगाई गई है उसको ये दे दिया जाएगा। और आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता कई बरसों से कोशिश की जा रही थी PIA की निजकारी के हवाले से, और कई मरतबा ये अमल जो है वो हमने देखा कि ताख़ीर का भी शिकार हुआ, लेकिन अब इसमें बाकायदा तौर पर हमने पेशरफ़्त देखी और बाकायदा तौर पर आज हमने देखा कि निजकारी कमीशन जो है उसने इब्तदाई तौर पर जो 6 बोली दहिंदगान है उनको इसके लिए अहल करार दिया था। इन कंपनियों में फ्लाई जिना, YB होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की सरबराही में कंसोर्शियम, एयर ब्लू लिमिटेड और पाक एथनॉल लिमिटेड, आरिफ हबीब कारपोरेशन लिमिटेड और ब्लू वर्ल्ड सिटी शामिल हैं। ताहम इस बोली में शमूलियत के लिए सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है उसकी जानिब से इब्तदाई रकम और कागजात जो हैं वो जमा करवाए गए हैं। एक इंतहाई अहम सिलसिला आपको बताएं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कौमी एयरलाइन की निजकारी के हवाले से निजी होटल में जो है ये अमल जारी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे फ़हद अजीज़ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फ़हद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से?
जी बिल्कुल, पीआईए की निजकारी के लिए बोली खोल दी गई है। कंसोर्शियम ने पीआईए की निजकारी के लिए 10 अरब रुपए की बोली जो है वो लगाई है। ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम की जानिब से सिंगल बिड जमा कराई गई थी और इसी के साथ इदारे की निजकारी के लिए ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम के अलावा किसी और ग्रुप ने ताहाल कागजात जो हैं वो नहीं जमा कराए और वफाकी काबीना से पीआईए की रिजर्व प्राइस की मंजूरी सर्कुलेशन से हासिल की जाएगी और जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन की जानिब से जो बिड उन्होंने रिजर्व प्राइस दी थी वो थी 85,030 मिलियन जो है वो उन्होंने दी थी और जो ब्लू बर्ड कंसोर्शियम की जानिब से जो उन्होंने बिड दी है वो है 10 बिलियन। तो इसी के साथ साथ अभी जो अमल है वो ये है कि वो काबीना से अभी इसकी मंजूरी फर्दर लेंगे। इनको अभी आधे घंटे का वक्त दिया है कि वो इस पर मज़ीद सोचें और अपनी बिड प्राइस जो है वो रिजर्व प्राइस के मुताबिक करें। जी अच्छा फहद, अब इसके बाद जो तरीक़ेकार है वो क्या होगा? अब आधे घंटे का वक्त जिस तरह आपने बताया कि दिया गया है, अगला प्रोसेस क्या होता है? अगर इससे ज़्यादा जो है वो बोली नहीं दी जाती तो क्या ये अवॉर्ड कर दिया जाएगा ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम को? बिल्कुल, अगर ये जो है इनको आधे घंटे का टाइम दिया है, अगर ये इसमें नहीं करते तो ठीक है फहद, आपसे मज़ीद तफसीलात भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पीआईए की निजकारी के हवाले से बोली खोलने का अमल जो है वो जारी है।